मैं आपसे मुत्तफ़िक हूँ। मैं समझता हूँ कि देखें MOUs और ऑब्जेक्टिव्स और एग्रीमेंट्स तो होते हैं, लेकिन बहुत से इंटरनेशनल फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ पॉलिटिकल कंसिडरेशंस भी होती हैं, जैसा अभी मेहताब भाई ने भी हवाला दिया, तो वो उसकी वजह से रियलिस्टिकली उतनी प्रोग्रेस सामने नहीं आती है। My country has been the target, our people actually have been the target of my country has been the target, our people actually have been the target of brutal sanctions imposed by the United States against us. But it didn't change our determination. It didn't change our policies. The Iranian people only answer to the language of respect, as we did in the past. Anytime they approached us with the language of respect, offered diplomacy, offered negotiation, reciprocated the same language, and we have answered positively to any diplomatic solution. Now, after 40 days of war, when the US became hopeless of achieving any goal in their aggression against Iran, they offered negotiation. We are interested in negotiation, but only if the other side is serious and is in line of real negotiations. We have no trust, and this is the main obstacle in the way of any diplomatic effort. I think all of you know that we have every reason not to trust Americans, while they have no reason not to trust us. In 2015, we made a nuclear deal with Americans, together with other members of the Security Council and Germany, the so-called P5+1. We negotiated for more than 2 years, almost 2.5 years, and we came to a very good deal, and the whole world celebrated that as an achievement of diplomacy. But only 1 year after it was concluded, the new US administration, which was the first term of Trump administration, withdrew from that deal with no justification, with no reason, while Iran was fully committed to all of its obligations in that deal, which is known as JCPOA. And then in 2025, in June, again, we entered into negotiation with them. After 5 rounds of negotiation, they decided to attack us. And we had 12 days of war in last year. This year again, they offered negotiations, first in Muscat and then 2 times in Geneva. The last round was on 26 February. And the Omani Foreign Minister, my dear friend Badr al-Busaidi, who mediated those negotiations, he posted a tweet and said that we made significant progress. I'm sure you have seen his tweet. And it's interesting that before he posted his tweet, he showed that to both delegations, the Iranian and US delegations. And the US delegation confirmed that yes, we made significant progress today. And hopefully we can conclude a deal very, very soon. But only 2 days after, on 28 February, they made an aggression, together with Israelis, against my people. So the most important issue right now is the question of trust. We cannot trust Americans at all. So everything should be exact. Everything should be defined very clearly before we can conclude a deal. We have resisted in a very
brutal war against my people. They couldn't achieve any of their goals. And it is obvious that those things they have not been able to achieve militarily, they cannot achieve on negotiation table unless there is a win-win solution achieved. So the current negotiation is suffering from the lack of trust. It is also suffering from contradictory messages we receive from Americans. Every day is different from the other day, from yesterday. A tweet today is different from yesterday's tweet. Sometimes in one day we receive two different messages. And this is the problem. And add to the question of mistrust. We know that there are also some spoilers who try to derail diplomacy. It's a fact. The warmongers who want to drag the U.S. again into another war. And I hope that wisdom and diplomacy will finally prevail. And we go in line of diplomacy to find a negotiated solution. There is no solution but a negotiated one. It's a fact. So with these brief comments, I am available for any question. ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब हुर्मुज़ सिर्फ ईरान के दुश्मन के लिए बंद है। अमरीकी पैगामात से मुज़ाकरात पेचीदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब हुर्मुज़ दोस्त ममालिक के जहाज़ों के लिए खुली है। अब हुर्मुज़ में खलल डालने का ज़िम्मेदार ईरान नहीं। अमेरिका संजीदगी दिखाए, ईरान मुज़ाकरात चाहता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की जानिब से कहा गया है कि ईरान जंगबंदी को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका संजीदगी दिखाए, ईरान मुज़ाकरात चाहता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की जानिब से ये कहा गया है। To India to decide for its relations. What matters for us is good relations which exist between us and India and economic. ईरान पर कई साल से पाबंदियां हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब हुर्मुज़ दोस्त ममालिक के जहाज़ों के लिए खुली है। ईरान जंगबंदी को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका संजीदगी दिखाए, ईरान मुज़ाकरात चाहता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने मज़ीद ये भी कहा है कि ईरान पर कई साल से पाबंदियाँ हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अब हुर्मुज़ दोस्त ममालिक के जहाज़ों के लिए खुली है। वो गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान जंगबंदी को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका संजीदगी दिखाए, ईरान मुज़ाकरात चाहता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की जानिब से कहा गया है। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि ईरान पर कई साल से पाबंदियां हैं। And we have said times and again that we don't want nuclear weapon, and this is not our policy. We have a peaceful nuclear program, and we have always been ready to make confidence that this program is peaceful and will remain peaceful. On the Strait of Hormuz, this is also our wish, that it would be fully reopened. As far as we are concerned, the Strait of Hormuz is open and all vessels can pass except the vessels belonged to those countries who are in war with us, who are fighting with us. Those vessels who want to pass should obviously coordinate with our military because of the mines and obstacles which exist.
So we will guide them to pass, as we have done for a number of Indian vessels, and we help them to pass. The safe passage of all vessels is our policy and in our interest, and we are ready to help those who want to pass safely and securely. This is our policy. At the same time, we have the blockade by the US. We have insecurity in the region because of the US aggression. So obviously the situation is not like the past. But once the aggression is ended, then I'm sure everything would go back to normal. And we make arrangements for the safe passage of all vessels from the Strait of Hormuz, together with Oman. As all of you know, Iran and Oman are two coastal countries in two sides of the Strait of Hormuz. The strait is located in territorial waters of Iran and Oman. There is no international waters in between. So everything should be managed by Iran and Oman, and this is what we are now consulting with each other to make sure that the arrangements, that there would be a good administration in the Strait of Hormuz in the future, which guarantees the safe passage of all vessels. ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान अमन का ख़्वाह है, हमारी ख्वाहिश है कि अबनाए हुर्मुज़ खुली रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मज़ीद ये भी कहा है कि किसी भी डील से पहले तमाम चीज़ें वाज़े हो जानी चाहिए। अमेरिका संजीदगी दिखाए, ईरान मुज़ाकरात चाहता है, उम्मीद करते हैं कि हालात जल्द मामूल पर आ जाएंगे। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा है कि ईरान अमन का ख़्वाह है, किसी भी डील से पहले उम्मीद करते हैं कि हालात जल्द मामूल पर आ जाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी डील से पहले तमाम चीजें वाज़े होनी चाहिए। In charge to answer those questions, but I think everybody knows that which country anything against Israel, and that was very unfortunate. The same country did help US and Israel in their attack, in their aggression against Iran. The same country provided the US and Israeli forces with their military bases, and as far as we are concerned, they are in a direct party to this aggression and should be held responsible. ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अबनार हुर्मुज़ सिर्फ ईरान के दुश्मन के लिए बंद है, किसी भी डील से पहले तमाम चीज़ें वाज़े होनी चाहिए। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि उम्मीद करते हैं कि हालात जल्द मामूल पर आ जाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी डील से पहले तमाम चीज़ें वाज़े होनी चाहिए, उम्मीद करते हैं कि हालात जल्द मामूल पर आ जाएंगे। हमारी ख्वाहिश है कि अबनाए हुर्मुज़ खुली रहे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका 40 रोज़ा जंग में कोई हदफ हासिल ना कर सका है, उम्मीद करते हैं कि हालात जल्द मामूल पर आ जाएंगे। मज़ीद ये भी कहा कि अमेरिका संजीदगी दिखाए, ईरान मुज़ाकरात चाहता है। And the situation in the Persian Gulf region, I have to say that we have more or less close positions, and we have and same interests in this important region. So we continue to coordinate with our Indian colleagues. As I said, the situation in the Strait of Hormuz is very complicated right now, and we are trying to help ships to pass safely. Everything would go back to normal once the act of aggression is totally. Minister Vishnu Shah from NDTV. उम्मीद करते हैं कि हालात जल्द मामूल पर आ जाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान अमन का ख़्वाह है, किसी भी डील से पहले तमाम चीज़ें वाज़े होनी चाहिए। अमेरिका 40 रोज़ा जंग में कोई हदफ हासिल न कर सका है। यह हकीकत है कि इस मसले का कोई अस्करी हल नहीं है। अमेरिका 40 रोज़ा जंग में कोई हदफ हासिल न कर सका। ईरान पर कई साल से पाबंदियाँ हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि यह हकीकत है कि इस मसले का कोई अस्करी हल नहीं है। किसी भी डील से पहले तमाम चीज़ें वाज़े होनी चाहिए। US illegal unilateral sanctions. So we are
obviously interested to continue our business in oil business, energy business, and we are ready to sell our oil to sanctions which are. ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी डील से पहले तमाम चीज़ें वाज़ेह होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका 40 रोज़ा जंग में कोई हदफ हासिल ना कर सका है। ईरान अमन का ख़्वाह है, उम्मीद करते हैं कि हालात जल्द मामूल पर आ जाएंगे। हमारी ख्वाहिश है कि अबनाए हुर्मुज़ खुली रहे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उम्मीद करते हैं कि हालात जल्द मामूल पर आ जाएंगे। यह हकीकत है कि इस मसले का कोई अस्करी हल नहीं है। ईरान पर कई साल से पाबंदियाँ हैं। अमेरिका 40 रोज़ा जंग में कोई हदफ हासिल ना कर सका है। अबनाए हुर्मुज़ सिर्फ ईरान के दुश्मनों के लिए बंद है। ईरान पर कई साल से पाबंदियाँ हैं। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि अबनाए हुर्मुज़ सिर्फ ईरान के दुश्मन के लिए बंद है। Business relations, I'm sure the capacity between the two is really high, and we can go back to same volume that we used to have, or even higher, as soon as sanctions are lifted. किसी भी डील से पहले तमाम चीज़ें वाज़ेह होनी चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद ये भी कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि अबनाए हुर्मुज़ खुली रहे, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के साथ 2015 में कामयाब मुज़ाकरात हुए। ईरान पर कई साल से पाबंदियाँ हैं। उम्मीद करते हैं कि हालात जल्द मामूल पर आ जाएंगे। ईरान ने जंग की शुरुआत नहीं की, ईरान अपना दिफा कर रहा है। अमेरिका संजीदगी दिखाए तो ईरान मुज़ाकरात चाहता है। उन्होंने ये